Welcome to lecture number 11 of the course Object Oriented Programming. In the previous lecture, we have seen overloading of binary operators. These includes plus operator, minus operator, assignment operator for 3D class. I have shown you the example of 3D class in which we have overloaded these operators. And then less than operator for distance class. That is to compare two distance, that if d1 is less than d2, we can write such statement, and that overloaded function in the distance class return the bool, that is true or false. So this boolean type comes from the boolean algebra, true or false, right? So plus equal operator, we have overload this operator as well in the distance class. So you can overload any of the operator that I have shown you in the previous lecture, a list of the operator that can be overloaded and 4 of the operators that cannot be overloaded. So जितने भी आप ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे वो पहले से प्री डिफाइंड ऑपरेटर होने चाहिए, कोई नया ऑपरेटर आप ओवरलोड नहीं कर सकते. And then we overload subscript operator, that is square brackets, a pair of square brackets. For a safe array class, we make a safe array, that is whenever we assign the value to the index, any index of that object, then the function, the overloaded function, check whether the index is within the range. If it is, then it assigns the value. So in this case we have seen three mechanisms. The first one is we can create two functions to get and set value of the safe array. आप दोनों functions जो हैं अलग से कॉल करेंगे. आपने safe array का ऑब्जेक्ट बना लिया a1, then you call a1 dot get value and you pass the index of that array. So वो इस index particular index I की value return कर देगा. Set value particular index I की value set कर देगा. So that is one of the mechanism that you have two functions and you can then call these functions. The second mechanism is you have a one function, we name it access, and it return by reference, return the reference of the particular index element of the array. So array के एक particular index element का reference return करता था, ये एक function जो access function था. So you have to call the access function like a1, that is the object of safe array, a1 dot access, and you pass the index and the value, right? So आप उसे इंडेक्स पास करते थे, वैल्यू पास नहीं करते थे, एक ही चीज़ पास करते थे. एंड दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड टू गेट वैल्यू from the array as well as to assign some value to the particular index of the array. For example, if you write a1 dot access and within the bracket you write 2 equals to 13, so 13 will be assigned to the second index element of the array a1, right? So a1 object के पास जो एक array है 25 एलिमेंट्स की whatever, उसके 13 इंडेक्स पे वो उसके सेकंड इंडेक्स पे वो 13 वैल्यू स्टोर कर देगा. सो उसकी स्टेटमेंट जैसे बनेगी सी स्टेटमेंट a1 डॉट एक्सेस विद इन पैरेंथेसिस 2 देन इक्वल्स टू 13, राइट? सो यू हैव नाउ वन फंक्शन इंस्टेड ऑफ टू फंक्शन. अब हमारे पास एक ही फंक्शन है जिसके थ्रू हम वैल्यू एक्सेस भी कर सकते हैं और वैल्यू उसमें राइट भी कर सकते हैं, उसमें वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं. वाई? बिकॉज इट रिटर्न्स द रेफरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जब भी वो एक्सेस का फंक्शन कॉल होगा वो उस पर्टिकुलर ith इंडेक्स एलिमेंट का रेफरेंस रिटर्न करेगा. सो यू कैन प्रिंट दैट वैल्यू फ्रॉम दैट रेफरेंस. ऑल्सो यू कैन असाइन एनी न्यू वैल्यू टू दैट रेफरेंस. और जब असाइन करेंगे उस रेफरेंस को तो बेसिकली वैल्यूज उस पर्टिकुलर इंडेक्स में लिखी जाएगी. And the third thing that we have seen is the overloaded subscript operator, that is returned by reference. So then we overload this subscript operator for the safe array class, and the overloaded function in the safe array class also return the reference of the object. For example, when we have the overloaded function for the square bracket in the safe array class, then we can write a1 square brackets 2 is equal to 13. So अब इस particular case में safe array का जो overloaded function है that will be executed, right? And 2 will be passed as a parameter to that operator
ओवरलोडेड ऑपरेटर को 2 पैरामीटर पास होगा एंड वो चेक करेगा क्या 2 जो पैरामीटर है इट एग्जिस्ट विद इन द रेंज ऑफ द अरे इंडेक्स 0 से लेकर उसके इंडेक्स तक जो मैक्सिमम वैल्यू इंडेक्स की है उस तक एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अरे का साइज 25 है तो चेक करेगा 0 से लेकर 24 के दरमियान ये रेंज ये लाई कर रहा है। इफ इट लाइज विद इन द रेंज देन that overloaded function returns the reference of that particular index। आपने 2 को पास किया था कॉल करते वक्त, you write the statement a1 square bracket 2 equals to 13 semicolon। so a1 square bracket 2, this will cause the operator overloaded function to be executed. The invoking object is a1 and the other operand is the index that you mention within the square brackets, that is 2, that will be passed to the function as an argument, and the function will check if the argument is within the range. If it is within the range, then it returns the reference of that particular index of the array that is contained by a1 object। so a1 object के पास जो array है उसका वो second index का reference return कर देगा, and then the statement become the reference of the second index of the array equals to 13। so उस second index पे आप 13 value assign कर देंगे। and similarly you can use this reference to get value। for example you can write in cout a and a1 and within square bracket you can write 2। so this means that you are going to print the value here। so वो उस particular second index का जो एलिमेंट है उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा, और जब वो सी आउट में आप इसको प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू को उस रेफरेंस की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द सेकंड इंडेक्स ऑफ द दैट अरे, right? And we have seen that the last approach, that is overloaded subscript operator, is more convenient and more readable as compared to the using 2 functions, getter and setter function, and 1 function access function, right? so function call से वो काम कुछ करेगा, but it is not more convenient as using the subscript operator square brackets। why? because हम जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है, जो बिल्ट इन डाटा टाइप है अरे की, वो हम इंटीजर टाइप का अरे डिक्लेयर करें, कैरेक्टर की अरे डिक्लेयर करें। सो यू यूज स्क्वायर ब्रैकेट टू एक्सेस द एलिमेंट, राइट? सो इफ here you are using square bracket to access the element of this safe array, then it is more convenient to understand this program and to read the code and understand all the thing, instead of writing the one function to get and set value, or 2 function for getting and setting values of the array. And then we have seen a little bit about the data conversion that is, if you are converting the data, for example integer to integer, then you do not need to write any kind of function, even if you are converting a data of the same user defined type. For example, d1 and d2 are the object of distance class, and if you write the statement d1 is equal to d2, now the values of d2, the values of the private data member of d2, that is feet and inches, will be copied into the private data member of object d1 and feet and inches of d1, right? so d2 object की private data member की value d1 में copy हो जाएंगी, and that will also be done by the C++ compiler। इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। ज़रूरत कब पड़ेगी? when you want to convert a user defined type into a primitive type, that is float or integer, or you want to convert a primitive type into a user defined type, right? or if you want to convert a user defined type, one user defined type into another user defined type, then you need a conversion function, right? and we will see how in this lecture how data conversion will be performed. We can have a constructor for this, and we can have also a conversion function for this thing. In today's lecture we will see a data conversion in a little more detail. We will see that there is a one argument constructor that can perform the conversion, as well as we have the conversion function that also perform the conversion from one type, from one user defined type to another user defined type, right? and then we will see how we can overload the stream operator, that is stream insertion operator and stream extraction operators, right?
So these are the less than and greater than operator. For example, in C out you can write C out, then less than, and then you have some kind of string. So here the C out is an object of O stream class, C in is an object of I stream class, and less than operator is basically the insertion operator. So these are basically less than and greater than. These are the bitwise left shift operator and bitwise or right shift operator, and they are already overloaded by the IO stream class, by the O stream class and I stream class, right? Or C out and C in are basically the object of O stream and I stream class, right? We will see how we can overload these operators, less than or greater than, that is stream insertion and extraction operators, in a user defined class, right? इन दोनों operators को हम user defined class में कैसे overload कर सकते हैं और इसका क्या benefit हमें मिलेगा. We will see this. Data conversion. In the last lecture we have seen that the equal operator will assign a value from one variable to another variable. For example, the statement like, so both of the variable are of integer type, so this assignment is done by the compiler by itself, and also the assignment the equal assigns the value of one user defined type to another provided that they are of same type. For example, the statement like this. So यहाँ पर दो distance जब add हो जाएंगे, they are assigned to the third object, और ये जो assignment होगी ये compiler implicitly provide करता है, right? For example, D3 की content D4 में copy कर देंगे, where dest4 and dest3 are the object of a distance class. So this kind of assignment are provided by the compiler itself, but you can overload equal operator for distance class as well. ठीक है, आप इसको overload भी कर सकते हैं. Thus, assignment between types, whether they are basic or user defined, are handled by the compiler with no effort on our part, provided that the same data type is used on both sides of the equal sign. So अगर equal के right तरफ int है तो left तरफ भी int होना चाहिए, और अगर equal के right तरफ distance type का object है तो left तरफ भी distance type का object होना चाहिए. So what happens when the variables on the different sides of the equal are of different type? So दोनों different type के हों. For example, if we want to assign any floating point value to a dest2 to a dest2, right, let's say, then what we have to do, कि हम कोई भी floating point value distance object को assign कर रहे हैं. Now the type on either side of the equal sign are different. The object on the right side is of distance class, and the value on the left side, the object on the left side is of that is dest2 is an object of distance class, and the value on the right side is basically a floating point value. So now for this kind of conversion we have to provide some functions, because C++ compiler or C compiler will not provide such conversion implicitly. So we have to express or we have to write the conversion routine explicitly. So let's see the distance class. We have used this class in many examples, so I hope this is very clear. Very basic definition of the distance class: feet and inches of the private data member. There's a one default constructor. The second one is the constructor with two arguments. Get dest will take input from the user. The distance in feet and inches is assigned into the private data member of the invoking object, and then show dest function, that is a constant function, right? It will display the distance. Okay, you can put a set dest function as well here. Now let's check out the conversion between objects and basic type. So basic type से आप object में convert करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कैसे आप उसको convert करेंगे? So this is the distance. These are the two functions in the definition of the distance class. So ये जो previously हमने definition देख लिया, इस definition में अगर ये दो function हम include कर लें, the first one is the constructor, right? So उसमें हमारे पास ये एक जो है ये constructor है. The other one is the operator float function. That operator float function is used to convert the distance object into the float type, right? So ये हमने last class में भी देखे थे, last lecture में भी देखे थे. Now we will see these things in more detail. So this is a main function, and in the main function
The second statement is we are creating a distance object, right? एक distance का object बना रहे हैं हम यहाँ पर, that is this statement, and we are assigning the value 2.35 to a dest1 object. Now here we are assigning a floating point value to a dest1 object. Now this statement is same like if we write it like this. So इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, right? So these both are the same statements. They will create an object and call a constructor with one argument, and the value passed to that constructor is 2.35, and this is the distance in let's say meters. So ये value यहाँ पर पास हो जाएगी distance मीटर में, and then we multiply that value with 3.280833 to convert it into the feet. So we get the value in feet, let's say 7 point something, some value 7.589, something like this. And then with this function what we did is we take the integer part and assign it to the feet, and then FLT feet माइनस फीट जब करेंगे तो आपके पास डेसिमल पार्ट आ जाएगा. इफ द वैल्यू इज इन FWT फीट वेरिएबल इज 7.56. सो ये सेकंड स्टेटमेंट से हमारे पास जो वैल्यू आएगी फीट में दैट इज 7, और 0.56 वैल्यू यहाँ से आएगी जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, यू विल गेट इन इंचेस. ठीक है, सो 0.56 फीट है हमारे पास, इसको जब मल्टीप्लाई 12 से करेंगे यू विल गेट द वैल्यू इन इंचेस, राइट. सो ये फंक्शन इस तरह से काम करेगा. नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है उसके बाद हमारे पास ये डिस्प्ले का फंक्शन है, वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी dest1 की. एंड देन द अदर थिंग इज वी आर कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस क्लास इनटू अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, राइट. एंड फॉर दिस वी हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ conversion function. Why conversion function? Why not constructor in the MTRS type? For MTRS type we have to write a constructor right like this. We need a constructor MTRS, and such that we can pass an object of distance type. ठीक है, so हम इसे distance type का एक object pass कर सकें. और MTRS की type क्या है? Float. That is primitive data type. So we cannot make changes in the primitive data type. जो उसकी basic definition है उसमें changes हम नहीं कर सकते. ठीक है, so this statement, this is not possible, right. So the other case that is possible is we can write a conversion function in the dest1 class, right. So हम dest1 class में conversion function लिख देते हैं. So conversion function की definition क्या होगी? You use the keyword operator, then you mention the type in which you want to convert the object of that class. So distance class में आपने लिखा है operator float. So ये operator float function कब execute होगा? Whenever you are converting the object of distance type into a floating point value, right. So what it will do is it will look, so आप मीटर की क्लास में MTRS की जो टाइप है that is float, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते because that is a built-in type. So what you do is you write a conversion function in dest1 class. So when this statement is executed, compiler will look for a conversion function, right, in a dest1 class. dest1 class distance है, उसमें conversion function को देखेगा, and that is the conversion function. It is here. So conversion function किस तरह से लिखते हैं? आपने ऑब्जेक्ट को dest1 ऑब्जेक्ट को किस टाइप में कन्वर्ट करना है? फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में यहाँ पर, राइट. सो दिस मीन्स दैट इस स्टेटमेंट में आप डिस्टेंस टाइप के ऑब्जेक्ट को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो दिस मीन्स दैट इन द डेफिनेशन ऑफ अ डिस्टेंस क्लास यू मस्ट हैव अ फंक्शन ऑपरेटर फ्लोट. सो ऑपरेटर तो कीवर्ड आएगा ही आएगा, वो कोई भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन लिखें उसमें भी आता है. एंड देन द टाइप, जिस टाइप में आप कन्वर्ट कर रहे हैं वो टाइप आ जाएगी. सो आप यहाँ पर फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फ्लोट टाइप लिख देंगे, राइट. अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इंटीजर लिख देंगे, वॉट एवर टाइप, राइट. एंड दिस कांस्टेंट इज हियर टू दैट टेल्स दैट दिस फंक्शन ऑपरेटर फ्लोट इज अ कांस्टेंट फंक्शन. This means that it is not allowable to change the value of the private data member of the invoking object, and here the invoking object is dest1. So इस particular case में invoking object कौन सा है? dest2 invoking object है, sorry. So dest2 will invoke operator float function from the definition of a distance class. So अब इस function में आप क्या कर रहे हैं? You are converting inches into feet. When you divide inches by 12, you convert it into the feet, right? Then you add the frac feet and
plus feet and assign it to the frac feet. So then you divide the frac feet by 3.280833. इसे आप divide करेंगे. This means that you convert it into meters and then you return it. ठीक है, तो अब आप इसको return कर देंगे. अब इस function की यहाँ पर operator float function की we haven't mentioned the return type of that function. Now what should be the return type of that function? Can you think of it? Yes, the return type of that function is float, because you are assigning the value from distance to float type. आप float में assign कर रहे हैं values. So इस function की return type वही होगी जो यहाँ पर इसकी type mention की जाएगी operator के बाद, right? So अभी हम देखेंगे कि हम user defined type को भी use करेंगे यहाँ पर. So if I mention here is operator int, right? So मेरे पास क्लास में डिस्टेंस क्लास में लेट्स से दो फंक्शंस हैं, एक है ऑपरेटर फ्लोट और एक फंक्शन है ऑपरेटर इंट, राइट? सो अगर मेरे पास अब मेन फंक्शन में इफ आई हैव अ मीटर mtrs अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, तब मेरे पास तब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऑपरेटर फ्लोट का फंक्शन कॉल होगा. एंड इफ द वेरिएबल ऑन द राइट साइड ऑफ दिस असाइनमेंट स्टेटमेंट, if the operator on the left side of this assignment statement, that is mtrs, is of integer type, then it will look for the operator integer function in the definition of a distance class. ठीक है, I hope now that is clear. Then here, so this will not be called, this is not possible, so that's why you write this function in the source object. So आप source object में ये function लिखेंगे, right? Then you create another object des2, right, and then you assign the value of des2 to mtrs. Here you are converting the distance object into the floating point object. ठीक है, आप floating point object में इसको convert कर रहे हैं, right? So floating point जो float की जो type है उसमें हम कुछ चीज़ें add नहीं कर सकते, कोई नया function नहीं लिख सकते. So we have to provide the conversion function in a user defined, that is distance class. ठीक है, so that will become the invoking object des2 here to execute this operator float function. To execute this operator float function, so des2 become the invoking object, right? And then it will convert the distance contained by the des2 object into meters, right? And then it returns that value, और value आपके पास meters को assign हो जाएगी, right? Now let's go to the program. Okay, so यहाँ पर हमारे पास एक conversion का हमने एक रख लिया है, constant रख लिया है, meters to float. So 1 meter is equal to 3.280833 feet. So this variable represents meter to feet, right? So we assign it this value to that variable. Now this is the constructor, ये constructor है हमारे पास. So convert, ये conversion का mechanism है जिसको मैं already describe कर चुका हूँ. Then we have this overloaded function, ये overloaded function है हमारे पास, right? So हमारे पास des2 में let's say आप 1 मीटर असाइन कर रहे हैं, okay. So in this case it will call a constructor. Which constructor? इस constructor कॉल करेगा जिसमें आप एक floating point value पास कर रहे हैं when you are creating a distance object, right? So you are passing this value. Constructor with one argument will be called, and then you are displaying the value of des1, so it will display 2.35, and then you are converting this value into meters, right? Let's say ये जो value है that is 1 meter, so 1 meter को वो convert करेगा और then वो show कर देगा distance की value, right? And these values are 1 meter में 3.28 डिस्टेंस होते हैं, तो इट विल ये वैल्यू जो शो करेगा 3 feet and some inches, 0.28 multiplied by 12 inches, right? Maybe this. And then here we are converting distance into mtrs.
MTR is the float type, right? So here the conversion function will be called, ये conversion function है, ये call होगा और ये कन्वर्ट करेगा इस डिस्टेंस के जितने प्राइवेट डाटा मेंबर हैं उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर लेगा एंड देन उसकी वैल्यू एक्सेस करने के बाद इट कन्वर्ट इन दैट डिस्टेंस इन फीट एंड इंचेस इनटू द मीटर्स एंड देन रिटर्न दैट वैल्यू एंड दैट वैल्यू विल बी असाइंड टू MTRS वेरिएबल. सो 1 इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा एंड देन यहाँ पर वैल्यू जो प्रिंट हो जाएगी वो 1 वैल्यू प्रिंट कर देगा, राइट. एंड देन यू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के आप जो डेस2 टाइप का ऑब्जेक्ट है उसको आप MTRS मीटर में दोबारा कन्वर्ट कर रहे हैं. हेयर द कन्वर्जन फंक्शन विल बी अगेन कॉल्ड, राइट, फॉर दिस वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. सो लेट्स से 6 feet एंड लेट्स से 2.8 है तो हम 5 इंचेस कर देते हैं, 6 इंचेस. So, यहाँ पर मीटर की वैल्यू हमारे पास 2 meters एंड सम फीट आना चाहिए, 2 meters 2 point something meters आना चाहिए, ठीक है. तो इसको भी देख लेते हैं आउटपुट क्या आएगी इसकी. लेट्स कंपाइल इट एंड रन इट. सो dest1 is 3 feet and 3.73 inches and when we convert this distance into meters the value become 1 meter, right. So हमने पहले इसको 1 meter असाइन कर दिया था इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त एंड देन वी प्रिंट इट. प्रिंट जब करेंगे तो जब बिकॉज ये 1 मीटर इसको साइन नहीं करेगा, मीटर में साइन नहीं करेगा, ये मीटर को कन्वर्ट करेगा फीट और इंचेस में और वो वैल्यू साइन कर देगा dest1 को और dest1 शो dest फंक्शन जो है ये प्रिंट करेगा फीट और इंचेस की वैल्यू, ठीक है. सो इसने फीट और इंचेस की वैल्यू को प्रिंट कर दिया पहले, फीट एंड इंचेस. थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं इस तरह से. लेट्स कंपाइल एंड रन इट अगेन. So 3 feet and 3.75 inches and that is 1 meter. Now dest2 is 6 feet and 7 inches. So that is nearly about 2 meters, right? So dest2 की वैल्यू 2 meters बन गई है. Okay. यहाँ पर अब एक और चीज़ देखते हैं. Let's say I have another parameter int in that is m, right, and let's say I am commenting out all this and here we are going to write m is equal to dest1. If I compile it, well, it can execute this function and assign the values. So let me comment out this function. Now cannot convert distance into int in assignment, right? But if I comment out this, so it uses the same function to convert the values. That is this one. So when I write cout m, let's see what would be the value. So 1 meter, it returns 1. Let's say the distance here is 1.5 meter. Now let's check out, it also returns 1 because वो जो इसका decimal part है उसको इग्नोर कर देगा. Why? Because this is an integer, right? So let me write another function, operator int const. Let's say this function return -2. Let me check out whether if we have this function then which function will be called, return -2. क्या वो इसको कॉल करेगा या वो इसको कॉल करेगा? If I execute it with type int, now the type of m is int. Let's check out. Now it is -2. So अब वो इसको कॉल कर रहा है basically. Now you can write the same routine over here as well to convert that feet and inches into meters, and that value is a decimal point, right? So this is how you can convert these values. So ये m की टाइप इंटीजर थी तो हमें ऑपरेटर int का फंक्शन अलग से लिखना पड़ेगा. अगर नहीं लिखेंगे तो वो ऑपरेटर फ्लोट के फंक्शन को ही यूज कर लेगा, राइट?
So this is how you can convert from a basic type into the user defined type, or from the user defined type into the basic type, right? So let's go to the program and let's check out one more thing. Okay, so I have to remove this integer things, right? इसको खत्म कर देते हैं. So what if we write test1 is equal to again 2. So हमें यहाँ पर इक्वल का ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा, राइट? So हमारे पास असाइनमेंट का ऑपरेटर ओवरलोडेड नहीं है. Maybe we need to overload an equal operator for this such kind of statement where you are converting a float type value, a basic type value into the distance object. So let's check it out. If we convert this operator equal sign and pass this as a parameter, and it will convert the reference of the object, invoking object, and let's say it says return static this, and here what we are doing is basically ये 2 meters हैं, 2 meters हैं, ठीक है. So we have to check if we convert, let's say feet में, if we convert this this value, let's say हमारे पास ये जो आ रही है ये meters में आ रहा है, ठीक है, एंड इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं. मीटर्स अनडिक्लेयर, सो मीटर्स. Okay, now we can write it something like this. We write these two statements as well, because अब यहाँ पर भी हमें इधर कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्टर में हम इसको मीटर पास कर रहे थे, इस कंस्ट्रक्टर में इसको हम मीटर पास कर रहे थे, और ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा था, बेसिकली ये उस मीटर को कन्वर्ट कर रहा था, मीटर जो वैल्यूज़ है उसको कन्वर्ट कर रहा था फीट में. इट हैज़ टू मल्टीप्लाई इट विद 3.280833, वो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा. फीट से फिर इससे हम इंटीजर पार्ट अलग करेंगे, जो उसका डेसिमल पार्ट है. We can get it like this, we can multiply it with 12 and we get inches, right? So same thing we are performing over here, that is over here, right? And it returns the pointer to the invoking object. And let's see then whether this assignment is performed or not. Okay, let me copy this statement, Control C, and paste it over here and here, and let's check out whether it works or not, ठीक है. So यहाँ पे which feet की यहाँ पे वैल्यू क्या 1 है और यहाँ पे 2 है. लेट्स चेक आउट, क्लोज. नाउ द वैल्यूज चेंज. सो 1 मीटर में, 1 मीटर में 3 फीट और 3.75 इंचेस होती हैं, और 2 मीटर में 6 फीट एंड 6.3999 इंचेस होते हैं, राइट? So now that is successful. So we can write such statement if we can overload the assignment operator. Assignment operator को हम overload कर सकते हैं कि हम उसको integer meter pass कर रहे हैं. So here we overloaded this assignment operator, इसको हम float में meter pass कर रहे हैं, we can say, so that we can pass 2.5 as well. Compile and execute. Now it works as well. ठीक है जी. So हमने अब देख लिया कि if we want to convert the basic type into a user defined type, we can overload equal operator in the user defined class. So हम distance class में equal operator को overload कर देते हैं. Now whenever this equal operator appear in this
with this assignment statement, तो यहाँ पर dest1 becomes the invoking object that will invoke this function, or the operand on the right side of the equal sign will be passed to this function as a parameter here, and then we convert this parameter into feet. So हमारे पास feet की value आ गई, some value, let's say 8.75, something like this. Then we get the integer value like this, because this is integer, so we take the integer part from this, so we get 8, and then the leftover is 0.789, whatever value in the decimal, that will be multiplied with 12, and then we get the inches, right? So this is the basic mechanism to convert convert meters into feet and inches, okay? And then we return the reference of the current object जिसमें हमने changes कर ली हैं, ठीक है? So अगर हम इसका reference return ना भी करें, it should work, ठीक है? There is no need to return the reference, I think, because we are working on the invoking object. हम already invoking object की values को change कर चुके हैं. So invoking object कौन सा test1 है, so इसकी values को already change कर चुके हैं. There is no need to return something, right? So let me compile it again. Okay. Okay, this is separate function call cout and line. So save, compile it. Yes, compilation is successful, and then we can execute it. And now dest1 is 3 and 3.37. dest1 is again values की change कर दी हमने dest1 की, हमने इसको मीटर में value assign कर दी है, ठीक है? And now the value is 8 and 2.42499, right? So what we can do is we can check it out like this. कि values वो double हो जाती हैं या नहीं होती? Close, compile it. Okay, now these values get doubles, right? So distance 1 को पहले आपने 1 मीटर assign किया था, then इसको print किया. So 1 मीटर में 3 feet और 3.73 inches हैं. So then you assign 2 meters to dest1. अब आप क्रिएट नहीं कर रहे, सो इस टाइम पर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा. इस टाइम पर तो 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया था. व्हाई? बिकॉज यू आर असाइनिंग इट व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज सेम लाइक इफ यू राइट डिस्टेंस dest1 and passing it value 1. So either you write this statement or this statement, they are equal. But once object create हो जाएगा तो दोबारा constructor उस object के लिए call नहीं होगा. So that's why here we cannot call a constructor, or the compiler will not call a constructor. So for that you have to overload this operator. आपको इस operator को overload करना है इस function के अंदर. You cannot write a conversion function for this. Why? For the conversion function जब भी लिखा जाएगा तो वो destination जो source object है उसमें लिखा जाएगा, destination में लिखा जाएगा, ठीक है? So conversion function जब भी लिखा जाएगा, just remember this point, whenever you have to write a conversion function, you will write the conversion function in the source object. So यहाँ पर source कौन सा है? Integer है या floating point है, that is basic types. So आप उसके अंदर changes नहीं कर सकते. You cannot write any conversion function inside float or integers. So the other option left is you can write an overloaded function routine in the dest1 class, that is distance class, और वो equal sign को overloaded करने की routine है, ठीक है? वो function है equal sign को overload करने का. Okay, but यहाँ पर एक और चीज़ देखते जाएं. Now if I write dest1 is equal to dest2, that is different. इस केस में ये function execute नहीं होगा, ठीक है? Let's say we have another object, we create another object dest2 और इसको हम value pass कर रहे हैं 2, right? Now इस particular case में हमारे पास ये equal sign का ये वाला function, ये वाला overloaded routine execute नहीं हो गया, because यहाँ पर जो parameter pass कर रहे हैं float में कर रहे हैं. यहाँ पर parameter जो है वो distance है itself, ठीक है? So इसके लिए कंपाइलर खुद से आपको फंक्शन प्रोवाइड कर देगा, बिकॉज दोनों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम टाइप के हैं, चाहे वो यूजर डिफाइंड टाइप हो या प्रिमिटिव टाइप हो. इफ द बोथ ऑपरेंड्स ऑन द
either side of the equal sign, they are of the same type. Either that type is a user defined or a primitive type, then you do not need to write any conversion function. But if the type is different, for example, you have on the right side you have a primitive type, and on the left side you have a user defined type, then you have to overload the equal operator, like in this case. But here it's optional that you provide the overloaded function for which you are passing this object as a parameter, right? And then you are assigning the value to the dest1. So इसमें ये optional है. So हम इसको assignment operator को एक दफ़ा overload कर चुके हैं. Maybe we need to write another function equal. हमें एक और फंक्शन लिखना पड़ जाएगा जिसके पैरामीटर्स इस तरह से हैं. डी ऑब्जेक्ट इसको हम पास कर रहे हैं, राइट. नाउ दैट इज फाइन. सो प्रीवियस केस में हमारे पास प्रॉब्लम आ गया था कि वो ये फंक्शन यूज करते हुए ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज आपने ये जो इक्वल ऑपरेटर का साइन था इसको ओवरलोड कर दिया था फॉर कन्वर्टिंग मीटर्स, दैट इज फ्लोट इनटू डिस्टेंस. Now if you want to convert to distance, then you have to write a separate function like this. So here you can write feet is equal to d dot feet, and you can write inches is equal to d dot inches. So आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है. So let's say अब dash2 जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसको we have initialized it with the 2 meters, and that meters will be converted into feet and inches, and then here we are assigning the value of feet of dash2 object to dest1 object, and then we are printing the value of dest1 object. तो हम देखते हैं कि dest1 object की values जो हैं वो updated printed होती हैं या नहीं. So they should be the double value that is printed over here, because dest1 की जो पहली value थी that is 1. So dest2 की वैल्यू 2 है, so dest1 की वैल्यू प्रिंट की, so 1 मीटर के हिसाब से 3 फीट एंड 3.7 इंचेस प्रिंट हो जाएगा. देन dest2 की वैल्यू आपने साइन कर दी dest1 को, dest1 की वैल्यूज चेंज हो जाएगी, वो 2 मीटर के हिसाब से हो जाएगी, दैट मीन्स 6 फीट एंड सम इंचेस, राइट. सो लेट्स कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट. यस, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है. और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट सी आउट ओवर हेयर. आप यहाँ पे सी आउट लिख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि यही एग्जीक्यूट हुआ है या दूसरा हुआ है ऑपरेटर इक्वल का फंक्शन. सेकंड ऑपरेटर इक्वल, ठीक है. सो हम इसको कॉल नहीं कर रहे अभी, अब हम ये फंक्शन कॉल करें. लेट्स चेक आउट कि ये वाला एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता एग्जीक्यूट फंक्शन. So second operator equal function execute हो गया successfully, right? Now if you write this thing and ignore this thing, then let's check out whether the first function will be executed or not. So आप इस तरह से messages print करके आप ये check कर सकते हैं इस चीज़ को कि क्या वो function execute हो रहा है या नहीं हो रहा. So इससे आपकी no, first we have to compile it and then execute it. Now first operator function execute हुआ है. Why? Because हमने ये इस तरह से लिखे हैं. आप दोनों को भी लिख सकते हैं एक साथ, जरूरी नहीं है कि आप एक को एग्जीक्यूट करें, आप दोनों को भी लिख सकते हैं. So this means that you basically overload operator equal function. ठीक है, ऑपरेटर इक्वल फंक्शन बेसिकली ओवरलोडेड फंक्शन है फॉर द असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड यू हैव ओवरलोडेड दैट फंक्शन एज वेल. ओवरलोड कैसे किया कि आपके पास सेम नेम है फंक्शन के, सेम नेम हियर है, बट द टाइप ऑफ द आर्गुमेंट इज डिफरेंट, राइट. सो इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया. आई थिंक नाउ दैट शुड बी क्लियर. नाउ कन्वर्जन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस. हमारे पास दो यूजर डिफाइंड टाइप क्लासेस हैं, और देन वी विल सी हाउ वी कैन कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास. So this can be done using one argument constructor or a conversion function. We have seen both of these things in the previous example. We have seen one argument constructor as well as we have seen a conversion function. But now we
we are concerned with if we are converting the object of one user defined type to an object of another user defined type. ठीक है, so एक यूजर की क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी यूजर की क्लास के ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा. प्रीवियसली हम बेसिक टाइप टू यूजर डिफाइंड टाइप और यूजर डिफाइंड टाइप टू बेसिक टाइप कन्वर्जन देख रहे थे. So the choice depends upon the whether the conversion routine has to be declared. Conversion routine means conversion function has to be declared in the source class or in the destination class. It's up to the choice of the programmer. To illustrate, consider a program that contains two classes A and B. Also consider the statement object A is equal to object B. So आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट B की वैल्यू असाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट A को, right? So in the above statement, object B of type B is converted to type A and assigned to object A. आपने ऑब्जेक्ट B की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है, ऑब्जेक्ट A क्रिएट करना है उन वैल्यूज के साथ, एंड देन वो ऑब्जेक्ट A रिटर्न कर देना है जो ऑब्जेक्ट A इसमें असाइन हो जाएगा. ठीक है, so object B is the source and object A is the destination, right? Because object A में अपने वैल्यू असाइन करनी है, so object B is the source object. If the class A handles the conversion, it will hold a conversion function. Sorry, if a class B handles the conversion, so अगर class B handle करेगी, because the statement is हमारे पास जो B है that is on the source side. That is, if I write B over here and then we have equal sign and then we have A, so it is like this. So let's say this B is an object of B class and A is an object of A class, right? So if the B class handles the conversion, it will hold a conversion function. अगर B class handle करेगी conversion को तो इसके पास conversion function होगा. On the other hand, if the A class carries out conversion, it will do through a constructor that takes the argument of type B, right? So वो किस तरह पॉसिबल है, अगर क्लास A आप इसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है, अगर उसके बाद आप असाइनमेंट करेंगे देन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. लेट्स टेक द एग्जांपल. दिस वन मोर थिंग, अगर आप क्लास A के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं एंड वाइल क्रिएटिंग यू आर असाइनिंग इट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास B, देन यू मस्ट प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर, राइट? आफ्टरवर्ड्स अगर उसके बाद आप ये काम कर रहे हैं A इज इक्वल टू B, A ऊपर का आपने क्रिएट कर दिया है, देन you have to write a conversion routine in a class B that converts the object of class B into class A, or I think you can also overload equal operator in class A, ठीक है, जिसमें क्लास B का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर चला जाएगा, राइट? वी विल सी दिस थिंग एज वेल. हम इसको भी देखते हैं कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं. वाइल जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसमें हम ये चीज़ कोडिंग भी देखेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल. किलोमीटर टू माइल कन्वर्जन. नाउ दिस इज द किलोमीटर क्लास. द only private data member in the kilometer class is KMS, that represents the kilometer. We have the constructor, one argument constructor, ठीक है, and then we have a display function and a get value function. Okay, now let's see the miles class. Now this is the miles class. हमारे पास एक constructor है, right? Constructor with one argument, और उसमें आर्गुमेंट की टाइप क्या है, डबल टाइप है, ठीक है. सो इस माइल्स क्लास की जो एक प्राइवेट डाटा मेंबर है दैट इज डबल माइल्स, ठीक है. एक माइल्स एक प्राइवेट डाटा मेंबर है, उसकी टाइप है डबल. और द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इज द वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जिसको आप वैल्यू पास कर रहे हैं और टाइप है उस वैल्यू की डबल, एंड देन इट असाइंस दैट वैल्यू टू माइल्स, दैट इज प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट. द अदर कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर जिसको आप वैल्यू पास कर रहे हैं the object of kilometer class, right? So what you do is then you access the value of that object using a public interface get value and convert it into the kilo miles by dividing it with 1.61. इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास किलोमीटर जो है वो माइल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. माइल्स, एक माइल्स जो है उसमें 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है. So 1 miles is equal to 1.6 kilometers, you can say almost 8 किलोमीटर, राइट. सो अब यहाँ से क्या होगा कि ये
एक आपको रिटर्न करेगा गेट वैल्यू, आपको रिटर्न करेगा डबल, एंड देन यू डिवाइड दैट डबल वैल्यू by 1.61 and then you get the value in the miles and you assign that values in the miles private data member. ठीक है, किस ऑब्जेक्ट का? इसके इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का. कब ये इन्वोक होगा? we will see in the example कब इन्वोक होगा. then we have a display function and then we have a operator kilometer function. So this is what kind of function it is it a overloaded function, overloaded operator function, किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करने का फंक्शन है, या ये कन्वर्जन फंक्शन है? You can see that there is no operator here, so it is easy to guess that this is a conversion function, right? From from converting from one type to another type. So what this function will do is it creates an object of kilometer class and returns that object. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट हम जो इसका मेन फंक्शन देखेंगे उसमें देखेंगे कि हम ये ऑब्जेक्ट कब कब कॉल कर सकते हैं. सो माइल्स फंक्शन में हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम किलोमीटर का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, एंड माइल्स क्लास में एक और फंक्शन है दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जन फंक्शन, और वो कन्वर्जन फंक्शन किलोमीटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है. सो इस फर्स्ट स्टेटमेंट में यू आर कन्वर्टिंग 100, you are assigning, we can say you are assigning a double value, double type value to a miles object, right? You can write 100.00, that is a double type value. So you are assigning that value into the miles object. So इस केस में आपके पास जो execute होगा that will be the constructor in the mile class. Because you are creating an object, आप object m1 create कर रहे हैं और during creation you are assigning it some value. So this is same like if you write miles space m1 opening parenthesis 100 closing parenthesis and semicolon. ठीक है, जिसमें आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और उस कंस्ट्रक्टर को एक आप डबल वैल्यू पास कर रहे हैं, और वो डबल वैल्यू क्या करेगा? वो m1 का जो प्राइवेट डाटा मेंबर है माइल्स उसको असाइन कर देगा. Okay, in the second statement, now this is the second statement, kilometer k1 is equal to m1. Now you are creating an object k1 and you are assigning it a value, or you initialize it with the object m1, or m1 object है miles class का. So we can have a two option here, or the first option is either we can have a constructor in the kilometer class, that is constructor is kilometer miles m, और because हमारे पास miles किलोमीटर की क्लास में इस तरह का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, the other option left is the conversion function. So we can have a conversion function in the miles class that is operator kilometer. हमारे पास ये conversion function होना चाहिए. So if you remember in the previous slide we have this function in the miles class. हमारे पास miles class में ये वाला function मौजूद है. And then you call a display function m1 dot display to display the value of miles object, and then you print out equal message and display the value of k1 object. So जितने 100 माइल्स हैं उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके वो उतने किलोमीटर डिस्प्ले कर देगा. The other part of the main function is this one. So for this it will execute the constructor in the kilometer class, because in the kilometer class we have a constructor जिसको हम एक डबल टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं, right? And what it will do, it will assign that value to the KMS private data member of K2 object. And then the next thing is miles m2 is equal to k2. अब यहाँ पर हमारे पास फिर दो options हैं. Either we can have a constructor in the miles class, and to that constructor we are passing a kilometer object, that is this constructor, or we could have a conversion function in the miles class, that is operator kilometer. So हमारे पास miles class में इस तरह का फंक्शन होना चाहिए. माइल्स क्लास में नहीं, किलोमीटर क्लास में इस तरह का फंक्शन होना चाहिए. कन्वर्जन फंक्शन जो है वो हमेशा जो राइट तरफ आ रहा है असाइनमेंट साइन के उसके अंदर रूटीन होगी, उसके अंदर फंक्शन होगा. जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास m2 में कन्वर्जन फंक्शन था ये वाला. ठीक है, सो इसी तरह से ये कन्वर्जन फंक्शन इन द किलोमीटर क्लास, एंड दैट कन्वर्जन फंक्शन इज ऑपरेटर माइल्स.
not kilometer, it should be miles. That is operator miles, miles, that is the name of the class, I think with capital M. So it should be miles, right? So that would be the output. So 100 miles is equal to 160 kilometers and 100 kilometers is 62 miles, right? Let's go to the program and see and understand more things from that program. Now this is the program in which we have two classes. This is the kilometer class. The only private data member of the kilometer class is kilometer with small k, ठीक है, जिसका प्राइवेट डेटा मेंबर है. कैपिटल के साथ किलोमीटर क्लास का नाम है, कैपिटल एम के साथ माइल्स क्लास का नाम है. द प्राइवेट डेटा मेंबर इज माइल्स विद स्मॉल एम. देयर आर थ्री फंक्शंस इन द किलोमीटर क्लास. कंस्ट्रक्टर, जिसको हम एक बेसिक टाइप का आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, दैट इज डबल. And then we have a display function, and then we have a get value function that returns the value of the private data member of the invoking object of kilometer class. So in the miles की क्लास में हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जिसको हम डबल टाइप की वैल्यू पास करेंगे, अनदर कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर को हम 1 किलोमीटर का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, राइट. सो विद दैट किलोमीटर्स ऑब्जेक्ट, so we can write small km, and that with that object we invoke a function get value to get the private value of the private data member of km object, और private data member है kilometers, उसकी वैल्यू एक्सेस कर लेंगे, and then we divide that value with 1.61, इसको डिवाइड करेंगे, and then we assign it to the miles, जो कि invoking object होगा इस कंस्ट्रक्टर का, उसका प्राइवेट डाटा मेंबर miles है, उसको असाइन हो जाएगी. Then we have a display function, और display function के बाद we have the conversion function, right? So conversion function in the miles class, इसको कैसे पढ़ेंगे कि this conversion function converts the mile object into kilometer object. ये miles के ऑब्जेक्ट को जिस क्लास में रिलाई कर रहा है उसके ऑब्जेक्ट को किलोमीटर ऑब्जेक्ट, जो टाइप यहाँ पे लिखी हुई है आपने किलोमीटर्स, दैट इज द टाइप किलोमीटर्स, राइट, इसमें कन्वर्ट कर देगा. यूजर डिफाइंड क्लास और टाइप, राइट. सो कैसे कन्वर्ट करेगा? इट कॉल द कंस्ट्रक्टर्स एंड मल्टीप्लाई माइल्स बाय 1.61, दैट बिकम्स द किलोमीटर, एंड हियर विद दिस स्टेटमेंट इट एग्जीक्यूट कंस्ट्रक्टर, दिस कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और ऑब्जेक्ट किलोमीटर क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट ऑब्जेक्ट विल बी रिटर्न्ड. ठीक है, इस केस में हमारे पास कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, इस केस में हमारे पास अगेन एक कन्वर्जन फंक्शन होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है, एंड देन इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास कंस्ट्रक्टर है. विच कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड फॉर दिस स्टेटमेंट? दिस इज सेम एज this is same as like this. So the constructor will be invoked from the miles class for the object m2, and you are passing an object to that constructor k2 whose type is kilometers. So that constructor will be invoked, right? It access the value of that object using a get value function, convert it into miles, and assign it to the private data member of m2 object. So let's compile and execute this program. Compile it and execute it. So इसको अगर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, and if this is 1.61, then let's see what happens. Okay, 1 miles is equal to 1.61 kilometer, and 1.61 kilometer is equal to 1 miles, right? So what if we write k2 is equal to 2? So for that we have to write an overloaded function that overload equal operator in k2 class. k2 is, that means kilometer class. ठीक है, ये otherwise ऐसे execute. Let me check out. That is the kilometer class, इसमें कंस्ट्रक्टर है, close,
So इसमें हमारे पास how to perform a conversion, it depends upon how you write the statement and where you write the conversion routine. For example, in this particular statement, if you can write the conversion routine on the in the class whose object is on the right side of that equal sign, or you can write a constructor who is appearing on the लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल साइन. आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं इस टाइप में, और आप यहाँ पर इसमें कन्वर्जन रूटीन फंक्शन भी लिख सकते हैं. एंड if you are converting from the basic type to the user defined type, then you can write, then you have to write a constructor when you are creating this object, right? Because you cannot write a conversion function in the double primitive type. जो double basic type है उसमें आप conversion function नहीं लिख सकते, ठीक है? So that's why you have to provide a conversion constructor over here in K2 class. Okay, now we have a constructor with one argument and display function and get value function. So let's go to the distance type class and check it out. If we have a constructor with this value, with the floating point value, then if I remove this statement, let me comment out this function, that is that I write this function to convert the basic type into the distance, right? For example, the statement like this, to execute the statement like this, I write this function. Now I comment out this function. So this conversion is still performed, right? So it depends upon you whether you provide the conversion function or you provide the constructor by passing that object on the right side of the equal sign or that primitive type that appear on the right side of that equal sign. For example, 100 pass होगा इसके miles class के constructor को. It depends upon how you write it, right? Now next come the overloading, stream insertion and stream extraction operators. So consider the statement C in dest 1 or C out dest 1, right? For example, so dest 1 is an object of a distance class, okay? So we cannot write a C in dest 1 or C out dest 1, right? Because we haven't overload this in stream insertion and stream extraction operators, right? To overload stream extraction or stream insertion operator, you have to make these operator function, operator less than, operator greater than sign and operator less than sign as a friend function to the distance class, right? And the return type of these function is stream and iStream and. So it returns the reference of the iStream object, and that is C in. And so iStream और OStream हमारे पास दो क्लासेस हैं, जिसके OStream का क्लास O मीन आउट स्ट्रीम, जिसका ऑब्जेक्ट हमारे पास C out है, और iStream का ऑब्जेक्ट जो है वो C in है. So greater than that is 1 bit, that is bitwise operator, 1 bit left shift, and less than 1 bit left shift is less than, and greater than is 1 bit right shift. So greater than operator is a right shift operator, bitwise right shift operator, this is here, and this is bitwise left shift operator, and these operators are already overloaded for this iStream and OStream class, right? Now we are again overloading this operator for our class as well, so that we can perform these statements like C in and less than, greater than dest 1. So whatever values is input, that is input by
input in this object dest1. We will see how. So पहली चीज़ इसमें है कि हमारे पास जो ऑपरेटर इक्वल साइन का ऑपरेटर ग्रेटर देन जो हमारे पास ये फंक्शन होगा और ऑपरेटर लेस देन फंक्शन, दीज फंक्शन शुड बी friend function of the distance class. Why they are friend function? I will tell you the detail in the next class. So this is the definition of the function. So definition में क्या कह रहे हैं हम इसको? Because this is the friend function, we are passing the reference of the iStream object, that is cin, and we are passing the reference of the dest1. For example, if cin greater than dest1 ये अपीयर होता है मेन फंक्शन में सेमीकोलन, देन इट इन्वोक दिस फंक्शन, और इसमें वो cin जो आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है उसका हम एज ए रेफरेंस पास कर रहे हैं, और dest1 जो डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका भी हम रेफरेंस पास कर रहे हैं. राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, सो हम वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं. ठीक है, सो सी आउट एंटर फीट and then we are inputting feet. Input किस में ले रहे हैं? S में. S is a reference of cin. ठीक है, जो cin जो स्टेटमेंट है यहाँ पे शुरू में लिखी थी इसका रेफरेंस है. So इसमें वैल्यूज अब इनपुट ले रहे हैं, एंड इनपुट लेने के बाद we are returning S. Right? And then OStream function, sorry, जो ऑपरेटर लेस देन साइन का जो फंक्शन है, इट रिटर्न्स एन रेफरेंस ऑफ द ओ स्ट्रीम, एंड व्हाट इट विल डू, इट विल डिस्प्ले. राइट, सो डिस्प्ले किस में करेगा ये? व्हेनेवर दिस स्टेटमेंट अपीयर्स इन द मेन फंक्शन. सो इसका मतलब है कि ये dest1 के कंटेंट डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर. राइट, कैसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा? वो इस तरह से करेगा कि जब ये अपीयर होगा, नाउ वी हैव ओवरलोडेड ऑपरेटर लेस देन फंक्शन इन डिस्टेंस क्लास, दैट फंक्शन विल बी इन्वोक्ड, जिसमें दोनों क्लास के दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं जो लेस देन साइन के लेफ्ट तरफ और राइट तरफ अपीयर हो गए, उनके रेफरेंसेस पास होंगे. सो सी आउट का रेफरेंस पास होगा एज ए फर्स्ट पैरामीटर, और dest1 का रेफरेंस पास होगा एज ए सेकेंड पैरामीटर. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, सो ये रेफरेंस S है, सी आउट का रेफरेंस है. सो S में वी आर राइटिंग d1 डॉट फीट. सो d1 ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, बेसिकली ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? dest1 ऑब्जेक्ट है, उसके फीट डिस्प्ले हो रहे हैं एंड उसके इंचेस को डिस्प्ले कर रहा है वो, एंड देन इट रिटर्न्स S. राइट, सो लेट्स गो टू द प्रोग्राम. सो दिस इज द प्रोग्राम जिसमें हम इस तरह से लिख रहे हैं cin dest1 dest2. सो दोनों डिस्टेंस के वो वैल्यूज इनपुट लेगा. ठीक है, देन सी आउट में हम डायरेक्टली dest1 लिख रहे हैं. वी आर नॉट राइटिंग, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बता रही हैं. सो इस केस में वो ऑपरेटर लेस देन का फंक्शन कॉल करेगा, और इस केस में वो ऑपरेटर ग्रेटर देन का फंक्शन कॉल करेगा. एंड दीज आर दीज फंक्शंस. वी हैव सीन द डिटेल ऑफ दीज फंक्शंस, एंड नाउ लेट मी कंपाइल इट एंड रन इट. So enter feet, 2 feet and 5.5 inches. So that is for the distance 1, and now for the distance 2. Right? So distance 1 और distance 2 दोनों के feet हमने enter करने हैं. Distance 2 के feet हैं, let's say 3 feet हैं and 4.5 inches, and it displays these 2 feet and inches. एंड दिस इज द फीट एंड इंचेस ऑफ dest3, और dest3 के हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया था इस तरह से. राइट, सो तीनों ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से डिस्प्ले कर दिया है. सी आउट dest1, cin dest1. राइट, सो दैट इज द एंड ऑफ अवर टुडेज लेक्चर. So in today's lecture we have seen we start with the data conversion, that how we can convert the basic type into the user defined type, or a user defined type into a basic type, and the conversion between two user defined type. We have seen the conversion function and a constructor, and when to call a constructor and when the conversion routine will be called. And then we have seen that how we can overload the stream insertion and stream extraction operators. And in the next lecture we will see the details of these overloaded function of the stream insertion and stream extraction operator, and then we will continue with the inheritance.
Thank you very much for the listening. Allah Hafiz.